Hi guys, it's me Raashi Khanna and you're watching me on Connect FM Canada with Faridoon. Stay connected. आप आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहती थी, तो आरबीआई ऑफिसर तो बनी गई आप। RBI ऑफिसर एटलीस्ट बनी है, and I hope फ्यूचर में IAS भी बन जाऊंगी। फर्जी में जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक कमाल का रिस्पांस आपको मिल रहा है। I think the casting was really perfect. Like I also thought that maybe this is tailor-made for me because I really enjoyed playing her and I felt like Megha after a certain point. So I think they could visualize it very well, and I think most of the credit goes to Rajan Dikesa and also Mukesh. राशि, आपकी 2022 में आपकी दो बहुत बड़ी हिट फिल्म्स आपकी आई, एक धनुष के साथ में, एक सरदार आपकी आपकी फिल्म आई थी। I remember having that conversation with Dhanush जहाँ मैंने धनुष को बोला भी था, मैंने कहा धनुष मेरा जितना भी पार्ट है just make sure that it's we added certain elements कि वो ऐसे नजरअंदाज ना हो जाए फिल्म। You're a Shah Rukh Khan fan as well, and you are literally hoping that it works entirely for him. I really relate to him somewhere as a person, and I love watching him talk. For me, he inspires me as a person more than anything else. शाहिद कपूर को as a father आप कैसे रेट करेंगे? He is a very good husband and a very good father. अगर आपको धनुष से कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे धनुष से सवाल? मैं उनसे ये पूछूंगी कि उन्होंने एक्टिंग कहाँ से सीखी। रवि तेजा से अगर कोई सवाल पूछना चाहें आप तो? I mean, it's very nice to see you happy, but how do you stay so happy all the time? I would ask him that. जूनियर एनटीआर से अगर आपको सवाल पूछना चाहें? How do you deal with your fans? Because your fan base is like so huge. If you get an audience with Shah Rukh Khan for 30 seconds, what will you tell him? No, I think I'll be very overwhelmed. शायद मेरी ज़बान ही बंद हो जाए, like maybe I won't be able to say anything because I really admire him. तो पता नहीं, I mean I'll have to meet him. राशि खन्ना, प्लेजर हैविंग यू विद मी ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सो आप आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहती थी, तो आरबीआई ऑफिसर तो बनी गई आप। RBI ऑफिसर एटलीस्ट बनी है, and I hope फ्यूचर में IAS भी बन जाऊंगी। That's the beauty of being an actor. You can play everything that you may want to have wanted to become, I think. So अभी मैं RBI ऑफिसर बन गई and hopefully in some place I can be an IAS officer at least on screen. Because देखिए, जैसे फर्जी में फॉर एग्जांपल जिस तरीके की इंट्रिकेट सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी थी, मुझे ऐसा लगा कि that it came rather naturally to you, and I think considering जो आपके जिस तरीके के aspirations थे, तो मुझे लगता है कि that कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है उसने भी। I think aspirations were to become an IAS officer, but to be an RBI officer, I mean, of course, you're an officer and you have to work on yourself, and probably just the dressing part, I can say, really adds to what you're trying to project, but you have to really get into that personality also. Abhi, I understand where you're coming from, where you're saying agar officer hai, like even if she's an RBI officer or she's an IAS officer, no, IAS officer comes with a sense of power also. Here in my case, I was always the subordinate, trying to rise up through the ranks. So it was different. I mean, it was a completely different experience, and I think जब मैं IAS officer play करूँगी तो शायद वो बहुत अलग experience होगा. Okay, so एक बहुत ही रियल किरदार जो प्ले करना अगर आपको जैसे मिला है, और इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें ह्यूमरस शेड्स भी हैं, लेकिन ह्यूमर जो है वो लाउड नहीं है, कि वो लड़का देखने के लिए जा रही है, जिस तरीके का मदर के प्रेशर्स हैं, एंड द वे शी हैंडल्स इट। सो ये ह्यूमर जो है वो यूजुअली फिल्मों में इस तरीके का ह्यूमर बहुत बार नहीं होता है। फिल्मों में थोड़ा सा लाउड होता है, इट्स प्लेइंग टू द गैलरी होता है। दिस इज मोर सटल, दिस इज लाइक मोर राजन डीके स्टाइल के सब टेक्स्ट में जो है वो एक ह्यूमर की एक परतें होती हैं। कितना मजा आया आपको एक एक्टर के तरीके के तौर पे, कितना मजा आया आपको इस तरीके के किरदार प्ले करने में? I think honestly being real is more difficult than being animated on screen. थोड़ा एनिमेशन में अगर आप चले जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, but when you're in the real space and to bring comedy to a real space is very difficult on screen, on camera, even as an actor. But I think the dialogues really supported us. The way it's written really supported us. We didn't have to do too much to get the comedy out because the dialogues were written in that way. And obviously there are little nuances of suddenly वो message करती है, then you're looking how you will behave in a real setting. So Rajan DK were very clear that they wanted it to be as real as possible. They said आप भूल जाओ कि cameras हैं, आप भूल जाओ कुछ भी है, like how will you behave in a setup like this where your mother's actually constantly doing this. So I think that is just very organic comedy that comes through, and I feel times are changing and people are actually liking that more because that's more relatable than the animated stuff we've seen so far in movies. और ये मुझे लगता है कि राजन डीके का थोड़ा सा आई थिंक उनका एक कुछ पैशन भी है
फैमिली मैन टू में उन्होंने समांथा को उन्होंने एक तरीके से रियल किरदार में, आई थिंक हैज अर्नड हर सो मच ऑफ प्रेज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट मेनली इंडिया। और अभी फर्जी में जिस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है, आई थिंक कमाल का रिस्पांस आपको मिल रहा है। सो ये कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक राजन दी के दे हैव अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग their actors maybe. So I think for me, I don't know how they thought of Sam for Family Man, but she was perfect in that role. But I think मेरे लिए they had seen an old audition of me जो मुकेश छाबड़ा के पास था। मेरा एक बहुत पुराना ऑडिशन उन्होंने देखा। उसमें भी बहुत रियल एक scene, I was playing a very real character in a scene, and I think they saw that and they saw some snippets of me from this film called Toli Prema, which was a little real and it was a love story. तो वो देख के उनको लगा that you know she looks the part and she can be she can be Megha. I mean, and after seeing that audition, they were convinced that I was Megha. And Raj sir told me that he really liked the quality of my voice. You know, so he said I thought this would really suit the character that we really want. So I think that way, I think the casting was really perfect. Like I also thought that maybe this is tailor-made for me because I really enjoyed playing her and I felt like Megha after a certain point. So I think they could visualize it very well. And I think most of the credit goes to Rajan D. Kesa and also Mukesh. राशि, आपकी 2022 में आपकी दो बहुत बड़ी हिट फिल्म्स आपकी आई, एक धनुष के साथ में, एक सरदार आपकी आपकी फिल्म आई थी। दोनों आई थिंक दे वर ह्यूज हिट्स एंड क्रिटिकली भी उसमें बहुत आपकी तारीफ हुई है दोनों फिल्मों में। सो एक उससे पहले पैंडेमिक में आपकी कुछ फिल्म्स आपकी ओटीटी पे आई हैं। नाउ दो बड़ी हिट फिल्म्स के बाद में एक आपका वन मोर डिजिटल रिलीज आपका होता है। तो ये कैसा एक आपका एक्सपीरियंस आपका रहता है, यू नो, बिकॉज मेनी टाइम्स जो एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, यू नो, दैट ये बड़ा पर्दा है, ये ओटीटी है, लेकिन यू आर जस्ट बीइंग वेरी कंफर्टेबल इन बोथ द वर्ल्ड्स एंड gaining equal amounts of success. So I think I don't see OTT as different from film. Of course, as an audience, there's a different experience you have watching a film on the big screen, or जब आप OTT पे show देखते हैं, तो of course the experience is very different. But I think character जो आप play करते हैं, जो आप किरदार निभा रहे हैं, you just have to be true to that, be it an OTT platform or be it a film. Because you have to be true to the craft and it really doesn't matter कि platform क्या है। तो I think that's why probably मैं बहुत comfortable थी OTT space में भी, and OTT never felt like OTT, it felt like an extended film. Especially when I was shooting with Rajan DK, I felt like this is like a long film. You know, that's how I felt, with more fleshed out characters. So I think OTT का अपना benefit है for actors especially because I feel हमें ज़्यादा in depth characters मिलते हैं। फिल्म में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, you don't get to flesh it out as much as on OTT. So I as an actor enjoy both the platforms and I think both of them have worked out well for me. And I think in future maybe I just have to balance both, because obviously as an audience I would love to see actors in films also and probably in OTT also. So I think it's a great balance and I think it is the time, it is the right time to be into acting and to explore your talent, and because there are so many opportunities now. ओके, नाउ आपके जितनी भी आपकी फिल्म है, मद्रास कैफे से अगर हम बात करें, मद्रास कैफे में भी आपके काम को पसंद किया गया और अप्रिशिएट किया गया। थोड़ा सा साउथ इंडिया की जो फिल्म्स है उनका कल्चर थोड़ा सा ये होता है दैट इट इज मेनी अ टाइम्स इट इज हीरो ड्रिवन, और यू हैव वर्क विद ऑल द बिग स्टार्स डाउन साउथ, लेकिन आपके जितनी भी फिल्में हैं एक आपको हमेशा आपके परफॉर्मेंसेस को, आपके किरदारों को क्रिटिकली जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यूनानिमसली। ये कितना जरूरी है आपके लिए कि टू जस्ट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर with any co-star that you may possibly have? See, I feel a lot of times people have asked me कि आप intimidate हो जाते हैं क्या set पे, you know, when you're working especially with big actors, and I'm like, अगर मैं intimidate हो जाती हूँ then you know that means I'm cheating my craft. So when I go on set, I think with time मुझे confidence आ गया to sort of you know stand neck to neck with anybody, because I feel कि वो बहुत जरूरी है कि आप अपना किरदार बन के सेट पे आए and you don't bring all that baggage of you know you are from a certain place और सामने वाले कोई certain जगह पे हैं। All that I look for on set is अगर कोई मेरे से senior है तो मैं उनसे कितना सीख सकती हूँ। And I feel, of course, I've also had ups and downs where not every film was critically acclaimed, not every film was a success.
बट आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट सक्सेस है उतना इंपॉर्टेंट फेलियर भी है, बिकॉज फेलियर टीचेज यू ऑफ कोर्स मोर देन सक्सेस एवर कैन. तो जब आप कोई गलती करते हैं तो भी आप सीखते हैं कि अच्छा अब मुझे ये दोबारा नहीं करना, या यू नो वेयर इज द डायरेक्शन वेयर आई एम गोइंग इनटू. बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी, क्योंकि मेरे को जितने भी किरदार अभी तक मिले हैं, आई फील अगर एक बड़ी फिल्म भी है वेयर यू हैव अ स्मॉल रोल, तो आई एम ओके विद दैट आल्सो टिल द टाइम वो रोल थोड़ा इम्पैक्टफुल रहे. लाइक इवन इन द धनुष फिल्म तिरुचित्रम्बलम, माय कैरेक्टर इज नॉट सो, it's not very lengthy, you know, but still people noticed कि हाँ this left an impact in a certain way. That's why I remember having that conversation with Dhanush, जहाँ मैंने धनुष को बोला भी था, मैंने कहा धनुष मेरा जितना भी पार्ट है, just you know make sure that it's like, I spoke to the director, I spoke to Dhanush, and I made sure that we added certain elements कि वो ऐसे नजरअंदाज ना हो जाए फिल्म में, because it is actually a story of Dhanush and Nitya. And I was glad कि जब लोगों ने देखा तो they did notice my character also. So I think मेरे हाथ में क्या है, it's just to give my best to the character I'm playing. उससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वही मैंने सीखा है. और audience is very intelligent, वो देखती हैं, वो you know they can notice very quickly if you're good at your craft or if you're not. So I think I've just been lucky with that support also from the audience. Now, for example, जैसे आप अगर अगर आप जूनियर एनटीआर के साथ में अगर आप काम कर रही हैं, नाउ जैसे आपने कहा कि दैट इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए एक्टर्स से, लेकिन कंसिडरिंग जैसे तारक की जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है वो आई थिंक गैर मामूली है. इट इज एब्सोल्युटली अनरियल सॉर्ट ऑफ फैन फॉलोइंग. सो आपको जब आप फिल्म को शूट कर रही हैं और ऑब्वियसली सबको पता है कि दैट यू आर शूटिंग अ फिल्म विद से तारक फॉर एग्जांपल, तो कैसा कैसा आपको आपको रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे? बिकॉज फैंस जो होते हैं वो तो दे लाइक टू डिक्टेट टर्म्स, यू नो कि इसमें क्या होगा, ये ऐसे करना वो ऐसे करना, which can be quite a handful, especially like say someone like say Hmm. Tarak for example. So Hmm. what sort of approach is that you have in such a situation? I think the fan ka thing is more pressure for Tarak than it has ever been for me, especially for his fans. Like he has a certain pressure that you know there's a certain thing his fans expect out of him. And the film that I did with him, जो मैंने जयला बच्चू के साथ करी थी उनके साथ, उसमें 3 different kinds of characters he was playing in the same film. तो उनके लिए ज्यादा प्रेशर था टू डिलीवर, उनके लिए ज्यादा प्रेशर था. बट आई डोंट थिंक वो ये सब सोचते हैं जब वो सेट पे होते हैं. आई थिंक वो भी जब सेट पे होते हैं, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. जब भी वो सेट पे होते हैं, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर, ही इज नॉट तारक ऑन सेट. सो ही डजंट कम विद दैट बैगेज दैट आई एम अ ह्यूज स्टार. यू नो ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन ऑन सेट, एंड ही इज अ वेरी नॉर्मल गाय. लाइक यू नो दैट इज व्हाट मेड मी ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल. मुझे कभी नहीं लगा ओ माय गॉड इतने बड़े स्टार के साथ मैं काम कर रही हूँ. वो बहुत ही नॉर्मल इंसान की तरह आते हैं, बट ही गिव्स इट हिज ऑल जब वो सीन कर रहे हैं. यू नो आई थिंक ही गिव्स इट हिज ऑल टू हिज क्राफ्ट, एंड दैट्स व्हाई ही हैज फैंस. इट्स नॉट लाइक कि वो फैंस के बारे में सोचते हैं, वो प्रेशर लेते हैं और फिर वो एक्टिंग करते हैं. आई थिंक वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं और ऑटोमेटिकली उनके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही सो ऑनेस्ट टू हिज क्राफ्ट. एंड आई थिंक जितना भी अगर वो बैगेज लेते भी होंगे तो वो शायद, आई थिंक वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन नॉट ऑन सेट. मैंने सेट पे कभी नहीं देखा. सेट के बाहर शायद होता होगा, बट नॉट नेवर ऑन सेट. So I spoke to him and he said that Jayala, it's maybe one of his best performances personally as an actor. So what do you think was so special about the film and the performance? I have seen him switch from, तो उनके 3 अलग अलग किरदार हैं उसमें. एक है जो जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, और एक है जो बहुत ही विलेनिस सॉर्ट ऑफ किरदार है उनका, और एक बहुत ही स्वीट सा है. तो जो स्वीटर वर्जन था वह उनके साथ थी. आई वाज पेयर्ड विद दैट गाय इन जयला बकुश. आई वाज पेयर्ड विद द स्वीटर वन. तो मैंने वो साइड देखी उनकी. बट आई रिमेम्बर मैं सेट पे रुक जाती थी काफी टाइम, बिकॉज आई वांटेड टू सी हिम ट्रांजिशन इनटू द अदर कैरेक्टर्स, के वो कितनी अच्छी तरह निभाते हैं और वो कैसे, यू नो, फॉर मी इट वाज अ लर्निंग. मेरे लिए वो एक फिल्म स्कूल था टू सी हिम गेट सो इजीली स्लिप इनटू दोस कैरेक्टर्स सो इजीली. और एक सीन था जिसमें उन्होंने तीनों किरदार निभाने थे. तो वो तीनों किरदारों में, लाइक यू नो, ही वाज सो एप्ट इन ऑल थ्री दैट आई डिडंट सी तारक, आई सॉ जय, आई सॉ लवा, आई सॉ कुशा. So I think for me, it was a great learning working with him. You know, how he gets into the character and how he does everything. I think that's why he is where he is, because he gives it his all. Okay, now जैसे आपका जो शुरुआत थी, आपका जो आपका स्कूल का आपका टाइम था, वो खासा आप टॉम बॉयिश आपका एक अप्रोच था और बहुत ही दिलचस्प सी आपकी कहानी है बचपन की. मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें जिक्र किया कि दैट इन योर यूथ, इन योर अर्ली पार्ट ऑफ यूथ, अर्ली 20s आई बिलीव, सो कुछ हद तक मतलब आप डिप्रेशन और इससे भी आपने डील किया, एंड दैट इज समथिंग दैट
स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारे तजुर्बों ने, एक्सपीरियंसेस ने आपको एज एन एक्टर कैसे कैसे आपको इंस्पायर किया, एंड हाउ हैज इट इम्पैक्टेड यू एज एन एक्टर? I feel pain is a beautiful emotion. I mean, I think जितना आपको पेन सिखा सकती है लाइफ में, सफरिंग सिखा सकती है, उतना आपको कोई और चीज नहीं सिखा सकती. You know, comfort can never push your boundaries. But pain and suffering, they push your boundaries. And I think आप जितना सफर करते हो लाइफ में, I know it's weird to say that, but आप जितना सफर करते हो उतना आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन. तो ये जितनी भी सफरिंग मैंने सफर, आई मीन व्हाटएवर दैट आई सफर्ड, एंड आई थिंक एवरीवन सफर्स इन लाइफ इन सम फेज और द अदर. मैंने जितना भी सफर किया है, आई हैव ऑलवेज यूज्ड इट एज अ टूल टू हेल्प मी ग्रो एज अ पर्सन. तो मैं कभी बिटर नहीं हुई उन एक्सपीरियंसेस को लेके. मैंने सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और मैंने सीखा है इसलिए मैं ज्यादा एम्पैथेटिक बनी हूँ एज एन एक्टर ऑल्सो. बिकॉज एवरी टाइम आई वुड सी कि ये मेरा किरदार है, आई वुड अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. यू नो, योर जजमेंट ड्रॉप्स, आपकी जजमेंट सारी गिर जाती है जब आप सेट पे आते हैं. आप नए नए किरदारों के बारे में पढ़ते हैं, आप उनकी बैक स्टोरी जानते हैं. तो on set of course there's a learning experience that you go through, but obviously आप personal life में भी जो सफर करते हैं या जो the pain that you go through also helps you become a better actor. I think it's a mix of both things. मैं आपका एक और इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने उसमें जिक्र किया कि अभी जो पठान की जो कामयाबी हुई है, तो आपको यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट शाहरुख खान, एंड अपेरेंटली you're a Shah Rukh Khan fan as well, and you are literally hoping that it works entirely for him. क्यों जरूरी फील होता है आपको आपको एक एक्टर के नाते कि that कोई और एक्टर आपको इंस्पायर करे, उनकी कामयाबी को आप लुक फॉरवर्ड करें? ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? I think मेरे लिए, see, of course Shah Rukh Khan is Shah Rukh Khan, but I feel more than the actor that he is, I love watching him speak. मुझे बहुत पसंद है जब वो बातें करते हैं, बिकॉज उनके हर इंटरव्यू में आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं. I've seen his TED talks, I've seen the way he talks. I think of course as an actor also, but I feel even as a person he inspires me a lot. इसीलिए मुझे, you know, I get inspired by him as a person more than anything else. Like I want to know what struggles he went through. I want to know, वो भी दिल्ली से हैं, उन्होंने भी शुरुआत करी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, and he's, you know, become what he's become. तो मुझे वो चीज बहुत इंस्पायर करी, उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करी, उनकी लर्निंग्स बहुत इंस्पायर करती हैं. एंड ही इज सो वाइज, एंड द वे ही स्पीक्स इन इंटरव्यूज, यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज आल्सो गॉन थ्रू अ लॉट. एंड यू नो, यू सी दैट विजडम, एंड यू सी दैट ही इज ऑलवेज सेइंग समथिंग ब्यूटीफुल. लाइक उनके शब्द भी जो वो यूज करते हैं, वो यू नो, इवन इफ ही थ्रोज दोस वन लाइनर्स, ही इज सो विटी. सो आई थिंक फॉर मी, I like him more as a person. Of course, he's a great actor and he's this enigma, but you know, I really relate to him somewhere as a person, and I love watching him talk. For me, he inspires me as a person more than anything else. राइट. विजय सेतुपति के साथ में आपने पहले भी आपने काम किया हुआ है, एंड यहाँ पर भी आपने आपने काम किया हुआ है. डू यू इन अ वे फाइंड इट फैसिनेटिंग कि दैट बहुत बार एक्टर्स के साथ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि दैट दे नीड टू बी चिजल्ड, दे नीड टू बी पिक्चर परफेक्ट, and they need to be very very prim and proper as far as their physicality is concerned. लेकिन विजय सेतुपति इस तरीके के एक्टर हैं कि जब वो पर्दे पे आते हैं तो पब्लिक उनके लिए रूट करती है, तालियां बजाती है. लाइक he's got like a crazy fan following. I'm sure that आपको तो अंदाजा ही है. आप do you feel that ये भी एक तरीके का stereotype है कि that certain physicality होना चाहिए एक्टर के पास में, and a certain way he should look, he or she should look? डिपेंड करता है, आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इट्स रियली नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी एट योर फिटेस्ट बेस्ट ऑल द टाइम. हो सकता है मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो बहुत रिलेटेबल है, उसमें मैं बहुत फिट नहीं लग सकती, बिकॉज यू नो, लेट्स, इफ इन ऑल ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स लोगों को फिटनेस में इंटरेस्ट है, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक ऑलवेज वेरी वेरी फिट. यू नो व्हाट आई मीन? लाइक वेयर everyone's like normal looking, they are not everyone looks like an athlete, and not everyone has to look like one. And I feel fitness जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर फिट नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते. You know, it depends on what character you're playing. It depends on how good at you are at your job also. जैसे I think विजय सेतुपति sir specifically, he's so good at his craft कि आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उनकी physicality पे. You'll be taken by the way he's delivering the dialogues. You'll be taken by the way he makes you emotional, और you know, उनमें एक अलग ही क्वालिटी है which works for him. Of course, कल को मुझे लगता है अगर ऐसा किरदार होगा जहाँ उनको he has to do a physical transformation, he'll work on that also. जैसे अभी recently उन्होंने एक पिक्चर डाली थी जिनका और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनको, because he had actually lost weight and he said my body wasn't supporting me so much. तो मैंने डिसाइड किया that you know, I want to lose weight. But that's not the first thing that should be in your head, that I need to be so fit. I think you need to work on your craft,
and it's nice if you are fit also, but it's okay even if you're not. I think अगर आप एक्टर हैं तो आप अपनी एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दें, और फिटनेस जरूरी है लेकिन not more than your craft. I think that is why you're here. You're an actor first and then everything else. सो आप फर्जी के अपने एक्सपीरियंस को एक अगर हैशटैग में अगर आप सम अप करना चाहें तो कैसे करेंगे? Oh my God. I think I'm the worst at rapid fires. But I think hashtag phenomenal. Because I think for Hashtag. me, it's been a phenomenal experience working with all these amazing actors, and I've learned so much and I've grown so much as an actor. So I think for me, it's phenomenal. देखिए, मुझे अंदाज़ा है कि ये सेग्रीगेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राज एंड डीके एज स्क्रीन प्ले राइटर्स और राज एंड डीके एज डायरेक्टर्स। Rajan DK, oh my God. Okay. I would say both, but because you're asking me slightly a little, like, it's difficult, but I think them as directors first. Yeah. राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी, चाहे वो फिल्म हो या फिर ओटीटी हो, अगर एक सेंटेंस में आप बताना चाहें? देखिए, आई थिंक राइटिंग कैन मेक और ब्रेक अ फिल्म, बिकॉज अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं इट विल कनेक्ट टू पीपल. अगर राइटिंग ही खराब है तो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते. तो आई थिंक राइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक वी नीड वेरी गुड राइटर्स इन आवर कंट्री, एंड वी हैव सम अमेजिंग वंस. और अगर आपको ऐसे अच्छे राइटर्स मिल जाए देन आई थिंक यू आर सॉर्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. राशि, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको मेघा की शादी करवानी हो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी हीरो से, चाहे वो साउथ के हों या फिर बॉलीवुड के हों, तो आपको लगता है कौन जो है वो उनके लिए आइडियल हो सकता है? आई थिंक मेघा के लिए कोई भी हु इज इन द लाइमलाइट विल नॉट वर्क फॉर हर. Okay. I don't think she'll look for an actor at all. पहले तो उन्हें लगेगा कि उनके लीग के बाहर है. मेघा जैसी सोचती हैं उनको लगेगा उनके लीग के बाहर है. वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि कोई एक्टर. आई थिंक वो सेटल करेंगी शायद किसी बैंकर के साथ, या somebody who's on the probably the same social standing as her. आई थिंक वो ऐसा किरदार है. तो मुझे नहीं लगता वो कभी एक एक्टर के बारे में सोचेंगी कि आई वुड वांट टू बी विद एन एक्टर और दिस एक्टर. शाहिद कपूर को एज अ फादर आप कैसे रेट करेंगे? तो आई थिंक शाहिद, फॉर मी व्हेन आई मेट हिम, तो वो सिर्फ अपने बच्चों की बातें करते थे, और आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी गुड फादर. बिकॉज मैं मीरा से भी मिली थी और मीरा ने भी मुझे बताया था कि बच्चे तब तक नहीं सोते जब तक शाहिद उनको स्टोरी नहीं सुनाते. एंड आई थिंक हिज किड्स आर वेरी लकी बिकॉज शाहिद जिस तरह स्टोरीज सुनाते हैं, ही इज सो एंटरटेनिंग, एंड आई वाज लाइक योर किड्स आर वेरी लकी दैट दे हैव सच एन एंटरटेनिंग फादर. बट उनकी बातों में, ही इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, उनकी बातों में ही पता चलता है, क्योंकि हमेशा वो यही बातें करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे को अभी टाइम स्पेंड करना है उनके साथ, आई वांट टू टेक अ हॉलिडे विद देम. He thinks of his wife, he thinks of his kids, which was very refreshing for me because he would always keep talking about them. So I think he is a very good husband and a very good father. ओके, सो राशि, अगर इन लोगों से अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उनसे क्या सवाल पूछेंगी? अगर आपको धनुष से कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे धनुष से सवाल? मैं उनसे ये पूछूंगी कि उन्होंने एक्टिंग कहाँ से सीखी. मतलब क्या उनके अंदर से आता है, या उन्होंने कुछ कुछ किताबें पढ़ी हैं. एक्चुअली आई डिड आस्क हिम दिस क्वेश्चन, और उन्होंने मुझे बोला वो बहुत किताबें पढ़ते हैं. तो आई डोंट नो ज्यादा लोगों को पता है या नहीं, बट आई थिंक उनका इनबॉर्न टैलेंट ही ऐसा है. लाइक ही इज बॉर्न विद इट. सम पीपल आर बॉर्न विद इट. आई थिंक ही इज बॉर्न विद इट. रवि तेजा से अगर कोई सवाल पूछना चाहें आप तो? कि वो अपनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं और अपनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं. बिकॉज मैंने कभी भी उनको कोई चीज कोई नेगेटिव बात करते हुए देखा ही नहीं है. वो हमेशा ही हंसते रहते हैं. तो आई एम लाइक, आप, आई मीन इट्स वेरी नाइस टू सी यू हैप्पी, बट हाउ डू यू स्टे सो हैप्पी ऑल द टाइम. आई वुड आस्क हिम दैट. पृथ्वीराज से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप क्या पूछेंगे? आई थिंक मैं उनसे ये पूछूंगी कि वो कैसे करते हैं ये सब. वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, अब वो प्रोडक्शन में भी चले गए हैं. तो आई वांट टू आस्क हिम हाउ ही मल्टीटास्क्स एवरीथिंग एंड हाउ ही इज गुड एट इट ऑल. जूनियर एनटीआर से अगर आपको सवाल पूछना चाहें, तारक से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो क्या पूछेंगे आप? I think I would ask him a very peculiar question. I would be like, how do you deal with your fans? Because your fan base is like so huge. आप कैसे डील करते हैं उनके साथ? How do you deal with them? Yeah. So if you get an audience with Shah Rukh Khan for 30 seconds, what will you tell him? I think मैंने बहुत बार अपने सर में सोचा है कि मैं उनसे मिलूंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी. Sometimes I sit with my friends who are also huge fans of Shah Rukh Khan, and मेरी कुछ दोस्त ऐसी हैं जो रोने लग जाती हैं. They're like, we just want to see him once. And I think, I don't know, I'd probably be very overwhelmed. I think I'll be very overwhelmed. शायद मेरी जबान ही बंद हो जाए. Like, maybe I won't be able to say anything because I really admire him. तो पता नहीं, I mean, I'll have to meet him to
to understand where I will be. But for sure, मैं बहुत overwhelmed हो जाऊंगी. That is for sure. So अगर आपको मौका मिले शाहरुख खान के साथ में काम करने का, तो आप कौन से जॉनरा की फिल्म में उनके साथ काम करना चाहेंगे? Romance. I don't know. Some story that's written where it works for both of us. Where I can be cast opposite to him, because I think he is so good at romance, and I think I would just want to be. I would just want to be that person he's pursuing. I'd love that. यू आर अ सिंगर एज वेल. अगर कोई गाना आप शाहरुख खान के लिए गाना चाहें, तो कौन सा गाना आप गा के सुनाना चाहेंगे उनको? आई थिंक तो मैं बहुत छोटी थी जब मैंने शाहरुख खान सर की फिल्में देखनी शुरू करी थी, और आई सी सॉर्ट ऑफ मेड मी फॉल इन लव विद लव. So I think there's this song that I really like, that I'll sing 2 lines of. Maybe I'll sing that song. That's the little girl in me singing for Shah Rukh Khan. दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ. Because he taught us to love is why this song is dedicated to him. That's amazing. That's amazing. Raashi, thank you very much for your time, and congratulations Thank you for so much. Farzi. I've been Thank you. getting amazing response. Anil Kapoor sir has been raving about it, and I think the IMDb ratings are tremendous as well for your performance. And looking forward to all your future films. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Faridoon. Thank you.